another 3 weeks, I believe, of sessions that will be there as a part of the CAT Mastery program. You can sign up for the program at a discounted fee of 8,000 rupees for 3 sections. So that is what you can do. And otherwise, the individual sections are available at 4,000 rupees each. So do check out those sessions, those that program that we have, and you can experience, or you can maybe build on your preparation of concepts, and you can solve more questions as we progress. In terms of the daily drill that we have, today is day 68. So if you have, as in if you have been a regular visitor of this channel, you will know that in this case, what happens is the test is made live the previous evening, and you can take it throughout the day. You can also take it later, but it's recommended that you take it before the session so that you are taking the test and attending the session on a regular basis. Right, I'll just switch on my chat and then we can start with today's session. So just give me a second. And just switch on my chat and then we can start. Hi, Kanch. So I think everything is fine. We are good to go. So today we have two passages that we will be covering in this reading comprehension session. And yeah, both of them are from CAT 2021, I believe. Same slot, CAT 2021 slot 1, I think that was the test that was there. So we'll have a look at those two passages and then we will see what we can infer and what exactly can be done about it. So we'll start reading it as we have been doing all along. So by now, I'm sure all of you would know the style in which we attempt RC. So what I generally do is I will read it properly. I will sort of go through the entire thing and maybe look at some points that are there, try to have a mental map of what exactly does this passage look like, and then we will have a look at the questions. And in case there is some question that involves some fact checking, we'll come back to the passage, but mostly we will not want to come back to the passage unless we want to just verify something, some fact needs to be verified. Only in that case will we be coming back to the passage. Okay. Hi Kevin, so let's start with the first passage. Let's start by reading it. The sleights of hand that conflate consumption with virtue are a central theme in A Thirst for Empire, a sweeping and richly detailed history of tea by the historian Erika Rapaport. Now, this is again a very long sentence. I generally keep on saying, like, long sentences are the ones which will confuse you, which will not allow you to have that train of thought that you like to have, right? So, if you are reading fiction, let's say, for example, typically the sentences will be much shorter than this, and they will involve much less complexity than this. So, sleight of hand, chalo, वहाँ पे कुछ तो पता है, right? If you have watched Magic, you might know that some misdirection, I will show you something, but then I will do something else, right? Those kind of things, that is basically sleights of hand. So, trickery in a way. That conflate consumption. अब ये conflate क्या होता है? So, conflate you don't know. Let's see. फर्क नहीं पड़ता. We'll look at it later. But हाँ, conflate एक word है जो अपने को नहीं पता. Consumption, you know. With virtue, virtue कुछ सुना हुआ है कहीं पे. Virtue and vice सुना होगा कहीं पे. So virtue is basically a good thing. So consumption and virtue. So consuming something is a good thing. बहुत बार ऐसे बोलते हैं that consumption might not really be a good thing, because if you are a consumer, if you are dealing with consumerism, it might not really be a good thing. You cannot have materialistic pleasures. ये सारी चीजें होती है. तो conflate consumption with virtue, मतलब कंजम्पशन और वर्च्यू को साथ में somehow मिक्स किया है, और दे आर ट्राइंग टू एनकरेज कंजम्पशन बाय saying that it is a virtuous thing. अब ये अगर नहीं भी समझ में आ गया, इट्स परफेक्टली ओके, लेट गो ऑफ इट एट दिस पॉइंट इन टाइम. आर अ सेंट्रल थीम इन अ थर्स्ट फॉर एम्पायर, ये कुछ तो एक नॉवेल या कुछ बुक है. अ स्वीपिंग एंड रिचली डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ टी. अब यहाँ पे अपना मेन पार्ट आता है पैसेज का, टी. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट by the historian Erika Rapaport. अभी कौन है? We don't know. It's okay, perfectly fine. But we are talking about history of tea here. How did tea evolve from an obscure China drink? So it originated in China, according to this passage, to a universal beverage imbued with civilizing properties. So obscure था, वहां से universal कैसे बना? The answer in brief revolves around this conflation. अब ये conflation मतलब again coming together, or maybe one thing increasing one thing because it is associated with something else. But not only by profit motivated marketers, but by a wide variety of interest groups. So marketers ने तो किया ही, not only by, it's not only by, but also by a wide variety of interest groups. So कुछ कुछ लोगों को कोई चीज में इंटरेस्ट था, vested interests थे, that's why they encouraged consumption of tea.
While abundant historical records have allowed the study of how tea itself moved from east to west, so China से बाहर कैसे निकला, Rappaport is focused on the movement of the tea, of the idea of tea to suit particular purposes. तो यहाँ पे पर्पस की बात कर रही है. We know that how it went from China to the west, वो अपने को पता है, but we are trying to figure out in this, or Erika Rappaport is trying to figure out how the idea of tea went, and it basically was used as something that could suit particular purposes. तो अच्छा ये करना है तो टी पीना चाहिए, ये करना है तो टी पीना चाहिए. सो टी का आइडिया वाज लिंक्ड टू सम पर्पस. तो वो कैसे हुआ, दैट इज बेसिकली व्हाट एरिका रैपेपोर्ट कवर्स इन हर बुक. Beginning in the 1700s, the temperance movement. अभी temperance movement क्या होता है, doesn't matter, but forget about it. Temperance movement. अब temper अगर पता है, you know that, right? Tempered glass, you might have heard of it. किसी चीज को टेम्पर करना मतलब उसको बीट कर करके यू बेसिकली फ्लैटन इट इन अ वे और रिड्यूस द इंटेंसिटी, जो भी मतलब दैट काइंड ऑफ अ थिंग. The temperance movement advocated for tea as a pleasure, right? So tea को pleasure करके यूज करते थे. That cheered but did not inebriate. अब ये inebriate is a nice word because inebriate essentially is used in terms of alcohol, right? So alcohol के context में यहाँ पे हम टी को देख रहे हैं. So टेम्परेंस मूवमेंट क्या बोलता था, दैट टी एक ऐसा प्लेजर है जो चीयर करता है. इफ यू हैव टी यू विल फील चीयरफुल, बट यू विल नॉट फील इनेब्रिएटेड. अल्कोहल ऑन द अदर हैंड यहाँ पे नहीं दिया है, बट अल्कोहल ऑन द अदर हैंड will might cheer you, might make you slightly relaxed, but it will also inebriate you. It will also make you drowsy. It might have some ill effects on your system, right? So because of that, टी को ज्यादा बेटर दिखाया गया. एंड इंडस्ट्रियलिस्ट सून बोरोड दिस मॉरल आर्ग्यूमेंट. अब ये मॉरल आर्ग्यूमेंट भी हो गया, भाई अल्कोहल तो इल विल के साथ या फिर इल्स के साथ एसोसिएटेड है, बट टी इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी इल बिहेवियर एज सच. सो मॉरल आर्ग्यूमेंट इन एडवांसिंग देयर केस फॉर फ्री ट्रेड इन टी. तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला कि भाई देखो ये तो कितना अच्छा ड्रिंक है, लेट्स ट्राई टू हैव फ्री ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट एंड हेंस मोर ओपन मार्केट्स फॉर देयर टेक्सटाइल्स. ठीक है, सो फ्री ट्रेड इन टी एंड हेंस मोर ओपन मार्केट्स फॉर देयर टेक्सटाइल्स. उनको बेचना था टेक्सटाइल्स, but they said that free trade करना चाहिए टी में, and उसके साथ में maybe they bundled textiles and they sent it. We don't know what they did, right? Hi Ravi, good evening. Factory owners joined in, compelled by the cause of a sober workforce, right? So sober workforce चाहिए था करके वो लोग भी आ गए. While Christian missionaries discovered that tea would soothe any colonial encounter. So ये क्या इसका मतलब है? Again, we have not been told, but we know that any colonial encounter को soothe कर दे. That's during the Second World War, tea service was presented as a social and patriotic activity. तो यहाँ पे patriotic activity भी हो गया, social activity भी हो गया, that uplifted soldiers and calmed refugees. So soldiers के upliftment के लिए and refugees को calm करने के लिए. So now we have been told about a lot of things, right? So एक तो alcohol वाला बात बताया था, then we were talking about free trade. So ये लोगों ने किया, फैक्ट्रीज ने टी को यूज किया टू बाय द कॉज ऑफ अ सोबर वर्कफोर्स चाहिए था उनको, राइट? क्रिश्चियन मिशनरीज ने उसको यूज किया. सो जस्ट राइट क्रिश्चियन मिशनरीज हियर बिकॉज वी डोंट नो हाउ एग्जैक्टली डिड दे यूज इट. वी जस्ट नो दैट कॉलोनियल एनकाउंटर को सूथ करने के लिए. सो इफ यू आर मीटिंग विद some colony, right? and वहां पे जाके if you are trying to propagate your thoughts and everything, तो वहां पे हम लोग कैसे करेंगे? We might use tea so that everybody is relaxed and calm and more receptive to ideas. So maybe that is the case. So Christian missionaries is one thing that we will write. And Second World War के अंदर यहाँ पे patriotic and social activity के लिए क्या? So social and patriotic ये सारे चीजें हैं जो टी के साथ यूज की गई, पर्पस के लिए टी को यूज किया गया. Now let's look at the next part. But it was tea's consumer-directed marketing by importers and retailers and later by brands that most closely portends current trade debates. ठीक है, अब ये पोर्टेंट क्या होता है वो भी अगर नहीं पता, इट्स परफेक्टली ओके. डोंट वरी अबाउट वन वर्ड, राइट? एक वर्ड से पूरा पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा. यू कैन स्किप दैट वर्ड, इट्स परफेक्टली फाइन. करंट ट्रेड डिबेट्स पोर्टेंट, तो यू कैन थिंक अबाउट इट लाइक पोर्टेंट मतलब कुछ सबटेंड करता है, राइट? लाइक एन एंगल. तो उसके ऊपर पूरा ट्रेड डिबेट हिंज करता है. यू कैन थिंक अबाउट इट. आई एम नॉट सेइंग दैट इज द मीनिंग, आई एम जस्ट सेइंग यू कैन थिंक अबाउट इट लाइक. An early version of the farm to table movement, एक farm to table movement कुछ तो था, was sparked by anti-Chinese sentiment and concerns over trade deficits as well as by the reality and threat of adulterated tea containing dirt and hedge clippings. So बहुत सारी चीजें थी. एंटी चाइनीज सेंटिमेंट तो था ही था, उसके साथ में एडल्ट्रेटेड टी होगा करके लोग डरते थे, राइट? क्योंकि टी कुड हैव बीन इजियर टू एडल्ट्रेट. यू नो दैट इट लुक्स लाइक ड्राइड लीव्स. अब ड्राइड लीव्स में कोई भी यूज कर लूं, मुझे क्या पता वो चाय पत्ती है कि क्या है, राइट? सो दैट्स व्हाई फार्म टू टेबल वाला मूवमेंट चालू किया था.
फार्म टू टेबल बेसिकली मीन्स दैट आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द फार्म एंड ब्रिंगिंग इट टू द टेबल. कोई भी यहाँ पे मिडल मैन या कोई सप्लाई चेन नहीं है. आई एम जस्ट ब्रिंगिंग इट फ्रॉम द फार्म टू द टेबल डायरेक्ट. लिप्टन वॉज सून एडवर्टाइजिंग फ्रॉम द गार्डन टू टी कप. सेम यहाँ पे लोगों ने यूज किया. सप्लाई चेन्स ओरिजिनेटिंग इन ब्रिटिश इंडिया एंड सुपरवाइज्ड बाय एजुकेटेड इंग्लिशमैन. सो एजुकेटेड इंग्लिशमैन उसको देखते थे, मतलब थोड़ा क्लासी फ्लेवर आता था या फिर जेन्युइन है करके बताते थे. While tea marketing always presented direct consumer benefits, health, energy and relaxation, ये benefits बताए जाते हैं हमेशा. Tea drinkers were also assured that they were participating in a larger noble project that advanced the causes of family, nation and civilization. तो टी पीने से फैमिली आगे बढ़ेगा, नेशन आगे बढ़ेगा, सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगा एंड सो ऑन. वैसे करके उसको प्रोजेक्ट किया जाता था. राइट. सो दैट इज बेसिकली हाउ मार्केटिंग वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रोपोगेटिंग टी. Rappaport's treatment of our subject is refreshingly apolitical. So although ये सब चीजें भी है तो उसके जो एनालिसिस जो किया है whatever she has written, it is apolitical in nature. Indeed, it is a virtue that readers will be unable to guess her political orientation. Both the miracle of markets and capitalism's dark underbelly are evident in T's complex story. Right? Miracle of markets, somehow it worked and everybody started consuming it. Maybe capitalism's dark underbelly, अब कुछ तो यहाँ पे कवर किया है. We don't know what happened. As are the complicated effects of British colonialism. अब यहाँ पे ये सब चीजें बोल के छोड़ दी हैं. Unless you read the book, you will not be able to understand what the author is talking about. Right? It's like watching a movie review and not knowing what the author is talking about because you have not watched the movie at all. तो उस टाइम पे यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट कि अच्छा व्हाट डू यू थिंक कि ब्रिटिश कॉलोनिज्म पे कैसे इफेक्ट हुआ होगा. तो प्रेडिक्शन वाला गेम नहीं है यहाँ पे. सो डोंट वरी अबाउट इट. अगर ऐसे ही हैंगिंग को छोड़ दिया तो डोंट वरी अबाउट इट, फॉरगेट. Commodity histories are now themselves commodities. Recent works investigate cotton, salt, cod, sugar, chocolate, paper, milk. ये सारी चीजें बेसिकली commodity histories में आ जाती हैं. Right? So commodity histories are now themselves commodities. Now, if you have read some marketing concept या फिर if you come from a marketing background, then you would know what commodity या commodification means, right? So generally, when we are talking about salt, let's say, so we will not go to an outlet and say that give us Ashirwad salt or give us whichever salt, right? Tata tea, Tata salt दे दो करके, right? We generally go and say Tata salt दे दो करके. नूडल्स अगर खरीदने हैं, we will go and ask for Maggi, right? So we will not say noodles. You want a photocopy, you will say Xerox चाहिए. So that is basically what happens in this case. So that is the, in fact, if you look at marketing principles, that is the ideal scenario that exists, right? Every brand will want to become a commodity because the brand name has to be associated with the commodity. तो वहां पे जाके you will just go and say कि मुझे एक चीज दे देना करके, मुझे बर्बन बिस्किट दे देना. राइट. अब वो बर्बन किसका है, ब्रिटानिया है, पार्ले है, वी डोंट रियली नो, बट इट बेसिकली गेट्स एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ब्रांड. एंड अगर वो हो जाता है देन यू आर minting money, right? Then you don't really have to do anything because nobody else will be able to capture that particular identity that exists. So वो बहुत ज्यादा important होता है. And again in this case as well, commodities, this is basically what we're talking about. अब यहाँ पे commodities generally क्या होते हैं? Cotton, salt, cod, sugar, chocolate, paper, milk, ये सब चीजों का काफी ज्यादा लिटरेचर इस पे लिखा गया है. So now the author is saying, or the author of this passage is saying that commodity histories are becoming a commodity in themselves. Why? Because there are so many of them available कि वो एक commodity जैसे available everywhere types हो गए. राइट. सो कॉटन, सॉल्ट, शुगर, ये सब जगह पे अवेलेबल होते हैं. चॉकलेट्स आर अवेलेबल एवरीवेयर. ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे ही मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अवेलेबल एवरीवेयर एंड दैट इज बेसिकली व्हाट मेक्स अ कमोडिटी. ठीक है. नाउ digressions aside, let's continue with the passage. And morality marketing is now a commodity as well. हर चीज के अंदर morality marketing कर रहे हैं. Applied to food, fair trade apparel and eco tourism. ये सब जगह पे मोरालिटी मार्केटिंग हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है. सो ये भी एक कमोडिटी हो गया. हर चीज के अंदर मोरालिटी मार्केटिंग करते हैं कि बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज दिस, यू आर गोइंग टू इम्पैक्ट द नेशन इन अ पॉजिटिव मैनर, और बिकॉज यू आर गोइंग टू डू अ गुड थिंग फॉर ह्यूमन काइंड. तो वैसे इसको मार्केट किया जाता है. Yet T is, coming back to the discussion, yet T is Rappaport makes clear a world apart and astonishing success story in which tea marketers not only succeeded in conveying a sense of moral elevation, तो convey किया उन लोगों ने, succeeded in conveying moral elevation कि भाई चाय पीने से morally you will be superior to the consumer, but also arguably did advance the cause of civilization. तो arguably did advance, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ convey किया सेंस कि अरे ये पीने से ना महान बनोगे. इनफैक्ट इट एडवांस्ड सिविलाइजेशन एंड कम्युनिटी. तो ये एक्चुअली रियलिटी में हुआ है. राइट. सो दिस इज बेसिकली व्हाट इट लुक्स लाइक.
I have been offered tea at a British garden party, a Bedouin campfire, a Turkish carpet shop, and a Japanese chashitsu. ठीक है, अब जो भी है डजेंट मैटर, इट बेसिकली अलग अलग जगह पे टी मिलती है, सो इट्स यूबिक्विटस इन अ वे. In each case, the offering was more an idea, friendship, community respect than a drink, right? So friendship, community respect के लिए चाय पी लेते. Than just a drink, जो जो हम लोग thirst quench करने के लिए या to feel to get some rush उसके लिए नहीं पी लेते. We are just having it for friendship, community respect. That's how we consume tea. And in each case, the idea then created a reality. It is not a stretch to say that tea marketers have advanced the particularly noble cause of human dialogue and friendship. Right? It's not a stretch to say. तो मतलब it's reasonable to say that टी marketers ने advance किया है humanity को, friendship को, human dialogue को, सबको advance किया. So again, whatever you have written here, this basically is an explanation of the previous couple of lines. So moral elevation को convey किया है, but actual moral elevation has also happened. ठीक है. सुमित, अगर पढ़ने का सब ब्लैंक होता है ना, तो मतलब अगेन ट्राई टू रीड थिंग्स, पैराफ्रेज इन योर माइंड की क्या होगा करके. एंड एक मैंने एक दो वीडियो में बताया भी था. व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स से यू रीड एन एन आर्टिकल और एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू, और कहीं पे भी इकोनॉमिक टाइम्स, कहीं से भी कुछ भी पढ़ा, लेट्स से, ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल पढ़ा एएल डेली से, प्रोजेक्ट सिंडिकेट से, कहीं पे भी पढ़ा, राइट. थिंक अबाउट व्हाट ऑल आर द मेजर आइडियाज अकॉर्डिंग टू यू एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पैसेज. उसके बाद यू कैन पुट इट इन एनी ऑफ द जीपीटीज दैट आर अवेलेबल. तो चैट जीपीटी में डाल देना and ask ChatGPT to summarize it as it would have summarized or it would have explained to a 10-year-old. ये लैंग्वेज में उनको बताने बोल. एंड देन सी इफ योर वर्जन ऑफ द स्टोरी मैचेस देयर वर्जन ऑफ द स्टोरी और नॉट. एंड ये तब तक करते हैं ना जब तक यू डोंट गेट रियली गुड एट समराइजिंग थिंग्स. तो वो करने से यूर पढ़ने के बाद मतलब ब्लैंक जो होते हैं ना वो कम हो जाए. ठीक है. सो हियर आई एम अज्यूमिंग दैट एवरीथिंग इज फाइन. टी के केस में बोला था कि पर्पस क्या होता है करके. पर्पस के अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई है. अल्कोहल का सब्सटीट्यूट, फ्री ट्रेड करना है फैक्ट्री के अंदर, क्रिश्चियन मिशनरी, सोशल, पेट्रियोटिक, ये सारे एंगल्स हैं यहाँ पे जो दिए हुए हैं. देन बेसिकली कंज्यूमर डायरेक्टेड मार्केटिंग से फायदा हुआ था, तो एक तो एंटी चाइनीज सेंटिमेंट था ही. एंड वी ऑल्सो wanted to be sure that adulterated टी अपने को नहीं दिया जाता. एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंड वाज फार्म टू टेबल वाला मूवमेंट चालू हो गया. देन वी हैव बीन टोल्ड दैट जो ट्रीटमेंट था वो ए पॉलिटिकल था. पॉलिटिक्स का उसमें कुछ भी लेने देना नहीं था, विच इज फाइन. एंड मोरालिटी मार्केटिंग, कमोडिफिकेशन ऑफ कमोडिटी से थोड़ा डाइग्रेस कर गए. एंड लास्ट में हम लोगों ने क्या बोला कि हाँ मतलब ऑफ कोर्स कन्वे तो हुआ, ये चीज सक्सेसफुली कन्वे हुआ. पीपल जेन्युइनली बिलीव्ड दैट कंज्यूमिंग टी विल एलिवेट देयर मॉरल स्टेटस, बट एक्चुअली उनका मॉरल स्टेटस अपलिफ्ट हुआ और सिविलाइजेशन कम्युनिटी भी उससे बेनिफिट हुआ. दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि इट नॉट जस्ट प्रॉमिस्ड, इट आल्सो डिलीवर्ड. दैट इज द पॉइंट. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस एंड लेट्स ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस. The author of this book review is least likely to support the view. Least likely to support the view मतलब कुछ तो यहाँ पे दिया हुआ है जो हम लोगों को जो इसमें मतलब जो पैसेज में नहीं दिया हुआ है, right? So out of three options, out of four options, three will be consistent with whatever has been mentioned in the passage, and one option will be not exactly what is mentioned in the passage or not there in the passage at. या तो उसका उल्टा होगा या तो नहीं. टी ड्रिंकिंग वॉज समटाइम्स प्रोमोटेड एज अ पैट्रियोटिक ड्यूटी. यस, बताया गया ये वाला. दिस इज डेफिनेटली यस. द ऑथर इज लाइकली टू सपोर्ट द व्यू, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था वर्ल्ड वॉर वन में, आई थिंक वर्ल्ड वॉर वन था कि टू था, वन होगा आई थिंक, या सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी वर्ल्ड वॉर टू के अंदर. सो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर टी सर्विस वॉज प्रेजेंटेड एज सोशल एंड पेट्रियोटिक थिंग. सो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर टी को पेट्रियोटिक ड्यूटी के साथ जोड़ा गया, विच वॉज फाइन. द रिचुअल ऑफ ड्रिंकिंग टी प्रोमोट्स कंजीनियलिटी एंड कैमरेटरी. हो सकता है बिकॉज लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है प्रॉपरली that we are talking about community, respect, friendship. Friendship is camaraderie in a way. Congeniality is basically you are being congenial, you are being nice to people, right? Respectful can be derived from here. So yeah, yes, this is also something that has been mentioned in the passage. ठीक है. Tea drinking has become a social ritual worldwide. Yes, it has become. We have seen that बहुत सारी जगहों का नाम दिया हुआ है कि जापान में होता है, बिडोइन में होता है, टर्किश बोला था, एंड समवेयर एल्स, ब्रिटिश गार्डन पार्टी, हर जगह पे टी इज यूज, राइट. सो दिस इज फाइन. टी बिकेम द लीडिंग ड्रिंक इन ब्रिटेन इन द 19th सेंचुरी. अब ये लीडिंग ड्रिंक वाला पार्ट कहीं पे बताया नहीं गया है, 19th सेंचुरी कहीं पे बोला नहीं गया है. सो दिस इज डेफिनेटली आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज एंड द ऑथर माइट नॉट सपोर्ट द व्यू. लीस्ट लाइकली टू सपोर्ट द व्यू मतलब शायद करेगा अगर कहीं और पे सुना होगा तो, बट अदरवाइज फ्रॉम दिस पैसेज डेफिनेटली द ऑथर विल नॉट is not likely to support this view compared to the other three views that have been there.
ठीक है. So option D is the answer to the first question. So D is not supported, मतलब D basically is the answer, least likely to support. ठीक है. Second question, the book review argues that according to Rappaport, tea is unlike other morality products. Other morality products. So other morality products में क्या होता है, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई मतलब morality तुम्हारा moral status elevate होगा. But as we saw in the last part, tea not just promised but it also delivered. ठीक है. तो टी ने deliver भी किया. So appealed to a universal group and not just to a niche section of people. Fine, but delivery वाला मुझे चाहिए. Had an actual beneficial effect on social interaction society in general. Yes, actual beneficial effect. It not just promised, it also delivered. Was actively encouraged by interest groups in the government? No. Was marketed by a wide range of interest groups? No. सिर्फ market किया नहीं. Morality products की जैसा नहीं है, बाकी morality products जैसा नहीं है, because it promised and it also delivered. So tea also had an actual benefit on social interaction. That's what we are trying to what we have been told in the passage. Yeah, Divakar, the answer is correct. Option 2 is indeed the right answer. Okay. Next, third question. According to this book review, A Thirst for Empire says that in addition to profit motivated markets, tea drinking was promoted in Britain by all of the following except. Britain में कैसे promote किया था? So we saw those 5 or 6 things that were there. Christian missionaries की बात की थी, social, patriotism, factory workers. We spoke about free trade वाले जो groups थे, traders basically, उन लोगों ने किया. And one more was there, alcohol wala, right? Yeah, alcohol. So that was another thing that was. So let's try to see what is not here by all the following except. So ये except वाला question है. Factories to instill sobriety in their labor. Yes, ये बोला गया है. Sober labor force ऐसे कुछ तो दिया था. Yeah, sober workforce, right? So sobriety in their workforce, factory owners का दिया हुआ है directly. So this is fine. This is was promoted. Tea drinkers lobbying for product diversity. प्रोडक्ट डाइवर्सिटी की बात तो नहीं किया कहीं पे भी हम लोगों ने, जो भी लिखे थे वहां पे, राइट? बट लेट्स हैंग ऑन टू इट. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन. मैन्युफैक्चरर्स हु आर प्रेसिंग फॉर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स. यस, दे प्रोमोटेड. इनफैक्ट बोला गया कि इस पे ड्यूटी फ्री कर दो, एंड दे आल्सो वांटेड टू सप्लाई टेक्सटाइल्स, तो वो भी उनका एक हिडन एजेंडा था. बट दे प्रोमोटेड टी ड्रिंकिंग इन ब्रिटेन. The anti-alcohol lobby as a substitute for the consumption of liquor. Yes, inebriated वाला drink था, that will cheer you up but will not inebriate you. तो ये interest groups ने उसको promote किया. So the only group that, or the only reason why it was not promoted, or the only reason out of the four that might not have helped in the promotion of tea drinking in Britain will be option B. Tea drinkers lobbying for product diversity. ये कहीं पे बोला ही नहीं है ना. This is not mentioned in the passage. ठीक है. एंड समटाइम्स इट माइट हैपन दैट लिकर डायरेक्टली दिया नहीं है वहां पे. सो टी ड्रिंकर्स लॉबिंग वाला पार्ट यू माइट बी एबल टू एसोसिएट समवेयर, बट लिकर बोला नहीं है कहीं पे. सो इनेब्रिएटेड वर्ड का अगर मीनिंग शायद पता नहीं होगा, देन यू माइट एंड अप मार्किंग डी एज द आंसर, बिकॉज अल्कोहल तो कहीं पे, लिकर कहीं पे दिया नहीं है, राइट? बट मोस्टली तो आई थिंक यू विल बी एबल टू गेट इट. ऑप्शन बी हैज नॉट बीन मेंशन्ड एट ऑल, सो दैट शुड बी द आंसर. Today, conflating consumption with virtue, right? Today, conflating consumption with virtue can be seen in the marketing of. So, conflating consumption with virtue का मतलब क्या बना? Conflate. Again, as we saw, अगर मुझे conflating का meaning नहीं भी पता, तो भी more or less we derived, right? Yeah. So, more or less we derived that consumption and virtue goes together. तो ये consume करने से you are becoming virtuous. Consuming this particular thing is making you a better individual. तो ये हम लोग कर रहे हैं, तो एसोसिएट कर रहे हैं कंजम्पशन विद वर्च्यू को, राइट? सो ये हम कहां पे देखते हैं? सो लास्ट में यू विल सी दैट देयर वाज वन स्मॉल थिंग दैट वाज देयर, फूड था, एंड फेयर ट्रेड अपैरल था, एंड इको टूरिज्म. ये तीन जगह पे यहाँ पे मोरालिटी मार्केटिंग को एसोसिएट किया गया था. सो फूड, फेयर ट्रेड अपैरल एंड इको टूरिज्म. सो लेट्स सी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है. Sustainably farmed foods. So if you consume sustainably farmed foods, are you doing better for your environment? Generally yes. तो ऐसे इसको promote किया था ना. आप sustainably farmed foods खाओ तो वहां पे मतलब you will not ingest chemicals, you will not have the side effects that are there because of pesticides and so on and so forth. फ्रेशनेस करने के लिए अगर एडिशनली कुछ अगर मैं केमिकल्स डाल रहा हूं तो वो सब मतलब नहीं होंगे. सस्टेनेबली फार्म फूड्स इज बेसिकली समथिंग दैट इज रिलेटेड विथ वर्च्यू, राइट? वो करेंगे तो यू विल बी अ बेटर सिटीजन इन अ वे. अर्गोनॉमिकली डिजाइन प्रोडक्ट्स. अब अगर अर्गोनॉमिकल चेयर यूज करोगे तो यू आर अ गुड इंडिविजुअल. इसका कोई लेना देना नहीं है ना. सो अर्गोनॉमिकली डिजाइन प्रोडक्ट्स हैज गॉट नथिंग टू डू विद मोरालिटी. It has got a lot to do with comfort. It has got a lot to do with your personal health.
but because of that it's creating a positive impact on the environment or the human race, वो तो हम लोग कहीं पे बोल नहीं रहे. So this is not uh, conflicting consumption with virtue. ट्रैवल टू प्रिस्टीन डेस्टिनेशंस. अब इको टूरिज्म दिया है वहां पे, बट प्रिस्टीन डेस्टिनेशन का क्या उसमें लेना देना है? इको टूरिज्म ना, सो इकोलॉजिकल कुछ उसमें इंपैक्ट होना चाहिए था, राइट? डूइंग दैट विल मेक यू अ बेटर इंडिविजुअल बिकॉज यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी इकोसिस्टम. ऐसा कुछ होना चाहिए. अब ये प्रिस्टीन डेस्टिनेशंस का क्या लेना देना? So although travel has been mentioned, and this is basically how people will try to fool you, थोड़ा इको टूरिज्म करके यहाँ पे टूरिज्म दिया हुआ है. किसी ने अगर थोड़ा साइड से पढ़ा होगा, इको टूरिज्म देखा होगा, यू माइट फील दैट नहीं, ट्रैवल टू प्रिस्टीन लोकेशन तो इको टूरिज्म जैसा हो सकता है, बट इट इज नॉट द केस. प्रिस्टीन डेस्टिनेशंस. अब जस्ट बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग टू अ प्रिस्टीन डेस्टिनेशन, लेट्स से जो भी मतलब जिसको भी प्रिस्टीन माना जाता है, लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट स्विट्जरलैंड और यू आर टॉकिंग अबाउट मॉरिशस और समथिंग, राइट? तो यहाँ पे प्रिस्टीन डेस्टिनेशन में चले गए हम लोग, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर परसीव्ड एज अ गुड इंडिविजुअल. ऐसा तो नहीं होता. Natural health supplements. अब यहाँ पे भी again we are talking about natural health supplements. Because you are consuming natural health supplements, are you doing something good for the environment? Are you being perceived as an individual who is a good individual, good-hearted, kind individual, striving for the betterment of the society? ये सारी चीजें तो नहीं है ना. Natural health supplements, again it is for an individual. You are doing it for yourself. बाकी कुछ नहीं है. बट सस्टेनेबली फार्म फूड्स के अंदर हम लोग फार्म्स को भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? इन अ वे. So practices से सस्टेनेबल होगा तो अपना अर्थ विल लास्ट लॉन्गर, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? सो ऑल्दो इट इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग, मे बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज एज वेल, बट इफ यू लुक एट इट, चारों में से तीन जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए इम्पैक्ट करेंगे. सस्टेनेबली फार्म फूड्स ऑन द अदर हैंड विल इम्पैक्ट द एनवायरमेंट एंटायर. सो थोड़ा एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन यू माइट हैव टू यूज, बट द आंसर विल ऑफ कोर्स बी ऑप्शन ए. ठीक है. So that was the passage, the first passage. Ravi has asked a nice question. Is it a good option that we just take a look on questions before reading RCs? Ravi, it will be a good idea if you do that. My only problem is now if you look at the questions with a lot of intent, a lot of focus, and you read everything nicely, one, you will spend a lot of time doing that, right? Because if you are reading a question, let's say, and four options that follow, typically you might have to read somewhere around 40 to 50 words, let's say. तो 40-50 वर्ड यू हैव टू सिट एंड रीड. दैट विल टेक अ गुड 20-25 सेकेंड्स. चार क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर लो तो यू आर स्पेंडिंग 1.5-ish minutes रीडिंग द क्वेश्चंस. अब वो करने के बाद यू हैव टू गो टू द पैसेज एंड अगेन यू विल हैव टू लुक एट द क्वेश्चंस. सो 2 to 3 minutes यू आर स्पेंडिंग रीडिंग क्वेश्चंस व्हिच माइट नॉट रियली बी अ गुड इन्वेस्टमेंट. सो कैट के अंदर ये अज्यूम करके जाना दैट द एंटायर पैसेज इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड बिकॉज द लेंथ ऑफ द पैसेज इज नॉट सो मच. Where I will recommend you to read the questions and then the passage will be in terms of tests like say when it used to be IFT जब होता था उस टाइम पे, या फिर a test like a CET, maybe a CMAT, जहाँ पे वो स्पीड टेस्ट है, maybe a SNAP for example, जहाँ पे वो स्पीड टेस्ट होता है, and वहां पे you have a very long passage but the questions will cover only small bits and pieces of the passage. In that context, if it's a factual passage, a factual set of questions, then you can read the questions first and then look at the passage. बिकॉज फिर वहां पे सर्च एंड मतलब सर्च एंड फाइंड ही करना है और कुछ नहीं करना है वहां. बट अदरवाइज इफ यू आर लुकिंग एट दीज काइंड ऑफ पैसेजेस दैट हैव मोस्टली इन्फरेंशियल क्वेश्चंस, you will have to read the entire passage before you go about answering the question. So in that case, cat may as a blanket statement, I would always want to read the passage peacefully without having any bias or anything, and then have a look at the questions. Okay. Okay. Omkar, how much time should we spend while selecting RC? Omkar, not really a lot of time. What I would suggest is if you have no idea what you are reading, you might want to read the first line of each paragraph, first and last line पढ़ लेना, that's it, of each paragraph. So there were three paragraphs, let's say, in the previous passage, right? So तीन paragraph थे तो read the first and the last line of each paragraph, 6 line पढ़ लो, उसमें जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगता है. Beyond that, have a look at the questions. If there are a lot of questions, which of the following are true, which of the following the author mentions all of these except, ये वाले questions अगर आ रहे हैं, these are factual questions. ठीक है. All of these happened in the 1700s except. So these are all your factual questions that will exist. तो वो अगर बहुत ज्यादा है, then attempt the passage. अगर बहुत सारे inferential हैं, which one of the following would the author most likely to agree with? This is analogous to what? Title of the passage. ये सारी चीजें होंगी. Then the passage is mostly inferential and then you can take a call whether you want to solve it or not. ये सारा चीज करने के अंदर you should not take more than 1 to 1.5 minutes, right? 1.5, 1:45, 2 minutes पकड़ लो, उससे ज्यादा टाइम पास नहीं करना है for every passage. And if you look at a passage and the topic doesn't make any sense to you, let go of that passage then and so not more than a minute and a half on an average per passage for selection.
ठीक है. एंड ओमकार, हाउ टू improve आरसी का accuracy, ये तो मतलब we have discussed plenty of times in the past. If you go through any of the ask me anything live sessions that we did, एक 75 days to cat किया था a couple of weeks ago, तो you can have a look at that session. वहाँ पे भी I have given detailed ways in which you can think about RCs. But broadly अगर देखा जाए, there are a couple of suggestions that I generally give people. One, maybe record yourself when you are reading a passage and solving a passage, so that you know what you were thinking when you marked a particular answer. Then have a look at the solution and then see कहाँ पे अपना thought process match हो रहा है या नहीं हो रहा है. The second thing, you have to discuss your answers with someone. नहीं तो perspective change नहीं होगा. You will end up reverting to the same basal line of thinking that you had earlier, and उससे improvement नहीं आएगा. So don't do those things. ठीक है? Let's start with the second passage now. So, for the Maya of the classic period, who lived in southern Mexico and Central America between 250 and 900 CE, Common Era, the category of persons was not coincident with human beings as it is for us. So, persons or human beings ये दोनों एक नहीं थे for the Maya of the classic period. So, 250 to 900 Common Era, मतलब roughly again ranging from 1800-ish years ago to maybe 1200-ish, 1100-ish years ago. Was not coincident with human beings as it is for us. That is, human beings were persons. Human beings were persons, but other non-human entities could be persons too. मतलब human beings तो persons थे ही, but non-human entities could also be persons. In order to explore the slippage of categories between humans and persons, I examined a very specific category of ancient Maya images. Right? So slippage of categories between humans and persons. Slippage क्या होता है? ह्यूमंस और पर्सन्स के बीच का एक बाउंड्री होता है छोटा सा. तो ह्यूमन से लेके पर्सन पे कैसे चला जाता है, दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. आई एग्जामिन्ड अ वेरी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एंशिएंट माया इमेजेस. तो इमेजेस के हिसाब से देख के द ऑथर ट्राई टू फिगर आउट कि कैसे ये लोग कैटेगराइज करते थे. फाउंड पेंटेड इन सीन्स ऑन सेरामिक वेसल्स. तो वेसल्स पे पेंट करते थे. I sought out instances in which faces, some combination of eyes, nose, and mouth, are shown on inanimate objects. So, inanimate objects होते हैं, उसके ऊपर कुछ तो face बना दिया. So, let's say, for example, again, just to give you an example, let's say there was something that they had, right? Let's say they had a vessel that was there. So, ऐसा कुछ उनका एक vessel था, let's say. ठीक है. Now, this vessel has been given a set of eyes and a mouth. अभी of course this is not supposed to be done during the test, मतलब कर सकते हैं but ठीक है. So this is basically what it looks like. So let's say it's a teacup. ठीक है. So it looks like this, right? So face बना दिया उसको. Yeah. Consider my iPhone, which needs to be fed with electricity every night. So fed, this is personification in a way. So persons दिया हुआ है ना. So if you know this figure of speech personification, you will know what these people are talking. ठीक है. सो पर्सोनिफाई करते हैं. क्या किया? फेड विथ इलेक्ट्रिसिटी एवरी नाइट. सो ऑफ कोर्स एन आईफोन विल नॉट ईट लिटरली, बट वी आर सेइंग दैट वी आर फीडिंग इट विथ इलेक्ट्रिसिटी एवरी नाइट. स्वाडल्ड इन अ प्रोटेक्टिव बम्पर. स्वाडल्ड मतलब जैसे बेबीज को you tightly wrap them and you cradle them in a way, right? That is swaddled in a protective bumper, protected in a case, let's say. And enjoys communicating with other fellow phone beings. So communicate भी करता है with other fellow phone beings, जो normally करते हैं. So when we are sending a message, it's as if the two phones are communicating with each other. तो मैंने iPhone को ना person वाले attributes दे दिए, human attributes दे दिए. Does it have personhood, if at all? Because it is connected to me, drawing this resource from me as an owner or source. ठीक है. Does it have personhood? अगर can it be regarded as a person because it is connected to me, drawing this resource from me as an owner or source? अब इसका आंसर the author does not give, but for the Maya, who did have plenty of other communicating objects if not smartphones, the answer was no. So Mayans would not have regarded iPhone as a person. Non-human persons were not tethered to specific humans. मतलब एक iPhone is connected to an individual. ऐसा नहीं है कि एक iPhone है and that iPhone is impacting the entire world. ऐसा नहीं है. One iPhone is a strictly individual entity that exists, or it is related to a particular individual. वैसे होगा, right? So Mayans उसको एक person नहीं मानते थे, and they did not derive their personhood from a connection with a human, right? So it did not, they were not human because they were interacting with a human. ऐसे हो सकता था कि एक चीज है जो ह्यूमन का इंटरेक्ट ही नहीं कर रही है, राइट? बट इवन देन दे आर सेइंग दैट इट्स अ पर्सन. So let's say, for example, again something which we don't use. Let's say you're talking about the moon. Now you will say that the moon is a person, although we are not. The moon is not a person because we are using the moon to do something.
The moon on its own can be regarded as a person. It consumes light from the sun. It reflects light onto the earth in a way, right? ये सारी चीजें होती. So यहाँ पे we are they were very specific in terms of किसको person attribute करना है, किसको person नहीं बोलना है. And person किसको नहीं बोलना है, they were very clear. We should not call something that is associated with an individual, let's say, or because it is कनेक्टेड टू स्पेसिफिक ह्यूमंस, अगर वो होंगे तो उनको पर्सनालिटीज नहीं देंगे. फाइन. इट्स अ प्रोफाउंडली डेमोक्रेटाइजिंग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी वर्ड. ठीक है, डेमोक्रेटाइज कर मतलब एवरीबॉडी इज इक्वल इन स्पेसिफिक चीजों को ह्यूमन नहीं बोला, देवर लाइक जेनरिक है, सबको ह्यूमन बोला या पर्सन बोलेंगे. ह्यूमंस आर नॉट मोर इंपॉर्टेंट पर्सन. ठीक है, आर नॉट मोर इंपॉर्टेंट पर्सन. हम लोग ऐसे मोर इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है. We are just one of many kinds of persons who inhabit this world, right? So बहुत सारे persons हैं. Humans are persons, maybe animals are persons, non-living objects are persons, phenomena are persons, right? सारी चीजें persons हैं. We are one kind of persons. The Maya saw personhood as activated by experiencing certain bodily needs and through participation in certain social activities. ठीक है, तो कुछ नीड होना चाहिए और कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए. For example, among the faced objects that I examined, persons are marked by personal requirements. तो कुछ तो रिक्वायरमेंट होना चाहिए. हंगर, टायर्डनेस, फिजिकल क्लोजनेस, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो ही हम उसको पर्सन रिगार्ड करेंगे. एंड बाय कम्युनिटी ऑब्लिगेशंस, तो एक तो पर्सनल रिक्वायरमेंट, उसका अपना रिक्वायरमेंट, एंड एक कम्युनिटी के तरफ जो उसका ऑब्लिगेशन है. सो समथिंग दैट कम्स इन एंड समथिंग दैट गोस आउट. कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, रिचुअल ऑब्जर्वेंस, ये सारी चीजें कम्युनिटी का ऑब्लिगेशन है. इफ यू आर स्टेइंग इन अ कम्युनिटी, यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल दीज प्रैक्टिसेस. In the images I examined, we see, for instance, faced objects being cradled in humans' arms. We also see them speaking to humans. ठीक है, so faced objects जो है वो cradled in humans' arms हैं. They are also speaking to humans. These four elements of personhood are both turned inward, what the body or self of a person requires, inward जो अपने को चाहिए, and outward what a community expects. So inward and outward जो हम लोग बोले थे वही है. Personal is inward, what you need, and what community requires you are going to give. Right? So that is how it works. Of the persons who are part of it, underlining the reciprocal nature of community membership. Personhood was a non-binary proposition for the Maya. Right? Personhood was a non-binary proposition. Non-binary मतलब क्या? ये person है, ये person नहीं है, ऐसा नहीं है. So when I say binary, it's either yes or no. ये होता है. Personhood was a slightly mixed concept, right? Entities were able to be persons while also being something else. तो persons भी होते थे, कुछ और भी हो सकते थे. The faced objects I looked at indicate that they continue to be functional, doing what objects do. तो objects अपना काम तो करते ही थे, plus उनके पास personal attributes भी थे. A stone implement continues to chop, an incense burner continues to do smoky work. ये सब चलते रहता था, right? But in addition to that, they were also given person के qualities. Furthermore, the Maya visually depicted many objects in ways that indicated the material category to which they belonged. Drawings of the stone implement show that a person tool is still made of stone. तो वो अपना जो मटेरियल से बने थे तो वो हमेशा वैसे ही दिखाए जाते थे. सो मटेरियल कैटेगरी, सो इफ इट इज मेड ऑफ स्टोन, उसका बॉडी विल बी मेड ऑफ स्टोन. ऐसा नहीं होगा कि आई विल नॉट से दैट ओके दिस आई हैव ड्रॉन, ये जो है ना दिस वन दैट आई हैव ड्रॉन, ये एक स्टोन इंप्लीमेंट है, दिस इज अ स्टोन इंप्लीमेंट. ऐसे नहीं होगा. This will not be the case. So I will not draw it as a person. I will not draw it that such that it is made of flesh and blood. I will say that okay, ये कुछ तो एक मेरे पास एक स्टोन है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने आंख और मुंह बना दिया और बोला कि भाई ये है ना, ये है स्टोन इंप्रिंट. So this is what they did. This is not what they did. ठीक है. One additional complexity, the incense burner. So एक और additional complexity कर दिया. The incense burner, which would have been made of clay and decorated with spiky appliques, representing the sacred ceiba tree found in the region, कुछ तो बनाया था, is categorized as a person but also as a tree. ठीक है. So basically what they're saying is जो incense burner है, अब ये इंसेंस बर्नर आई डोंट नो कुछ तो होगा, ऐसे कुछ तो बनाया होगा आई थिंक, सम इंसेंस बर्नर. ठीक है, अब ये इंसेंस बर्नर है तुम्हारे पास. अब ये इंसेंस बर्नर जो है ये क्ले का बना होता है एंड इसको डेकोरेट करते हैं स्पाइसी एप्लिक्स. तो इसको कुछ तो ऐसे करके कुछ तो डेकोरेट करते हैं. ठीक है. नाउ दे दिस रिप्रेजेंट्स द ट्री दैट इज फाउंड इन दिस रीजन, सेक्रेड ट्री दैट इज फाउंड इन दिस रीजन. तो इसको पर्सन भी बोलते थे और उसको ट्री भी बोलते थे. सो दिस इज ऑल्सो अ ट्री एंड अ पर्सन. अब ये जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सुनने में, इट्स ओके, मतलब लेट गो ऑफ इट, बहुत ज्यादा इसमें पूछना नहीं है.
they regard it as a person and a tree. Fine, good for them. With these Maya examples, we are challenged to discard the person-non-person binary that constitutes our basic ontological outlook. अब ये ontological क्या होता है वो सब forget about it, doesn't matter. The porousness of boundaries, that slippage सुना था पहले, porousness of boundaries that we have seen in the Maya world points towards the possibility of living with a certain uncategorizability of the world. ठीक है. So Maya world के अंदर अगर हम लोग रहते थे, let's say, right, or what we have seen, we are talking about living with uncategorizability, right? इसका मतलब humans and non-humans, persons and not persons. ये नहीं हो सकता. मतलब you have to point, it points towards the possibility that categorize करना ऐसा जरूरी नहीं है. You can also live, or it is possible for you to live without categorizing objects as living, non-living, persons, not persons, and so on. राइट. काफी एब्स्ट्रैक्ट सा पैसेज है. इफ यू लुक एट इट, एक ही चीज बताया गया पूरे पैसेज के अंदर. वन टेक अवे फ्रॉम दिस पैसेज इज दैट मायंस जो थे, एंशियंट माया के जो लोग थे, दोज पीपल डिड नॉट रिगार्ड ऑब्जेक्ट्स एज नॉन लिविंग एंटिटीज और नॉन पर्सोनिफाइड एंटिटीज. वो उनको कुछ तो पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स देते थे. दैट्स बेसिकली व्हाट हैज बीन मेंशन्ड थ्रू आउट द पैसेज. और उसके आगे कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं बताया गया. यही चीज बार 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 बताया गया. एक चीज एक्स्ट्रा इसमें ये बताया गया है दैट द ऑब्जेक्ट दैट वाज गिवन person like characteristics, that was not supposed to be something that was useful to only one individual. It had to be a generic thing जो सबके लिए यूजफुल था. तो अब मून फॉर एग्जाम्पल, अब ये मून मेरा तो नहीं है, सबके लिए ही वो मून है वो, राइट. सो नाउ द मून कैन बी एट्रीब्यूटेड समथिंग. बट अगर मैं बोलूं कि अरे मेरा जो ये पेन है, दिस इज माय फ्रेंड एंड आई कीप इट वेरी नाइसली इनसाइड सम जो भी है in a box or something, so then matlab that is not what the Mayans will classify as a human, right? Because it is only interacting with you. Fine. So that is basically the problem. बहुत ही abstract सा passage है, but let's see what we can do with this. ठीक है. Now, which one of the following, if true about the classic Maya, would invalidate the purpose of the iPhone example in the passage? ठीक है. Now, I want to hear from some of you. What do you think about this question? Because if you look at the questions that are there, सारे के मतलब पैसेज ही इतना एब्स्ट्रैक्ट है तो फिर क्वेश्चंस में क्या करेंगे. So let's see if someone is able to come up with the answers to this one. So I'll just check the chat once and see what happens here. Let's see what all of you have to say about these questions. So I'll just wait for some 30 seconds on each question and see if anyone is able to give the answer or can think about something. All right, let's see. Yeah, Divakar has answered, and I think it is right. So let's see. Would invalidate the purpose of the iPhone example in the passage. So invalidate, मतलब iPhone example क्यों दिया था? iPhone example was not given to tell us what the Mayans did. iPhone example was given us to tell us what the Mayans didn't. Did not do. ये अपने को बताया गया, राइट. तो वो लोगों ने क्या नहीं करते थे. आईफोन जो है ना वो एक पर्सनल एंटिटी है, राइट. iPhone, because I am using an iPhone, I might want to attribute personal characteristics to it, right? It eats electricity. I have to keep it cradled nicely. और कुछ it communicates with other iPhones. ये हम लोग बोल रहे थे, right? That is what we are trying to attribute. But Mayans बोल रहे हैं कि भाई अगर ये individual item है ना जो एक individual use कर रहा है, then we will not be bestowing any personal attributes to it. ठीक है, तो वो हम लोग बोल रहे थे, one thing, right? And also because it was useful, तो हम लोग ये कर रहे थे. अब अगर वो useful नहीं है तो we will not attribute any personal characteristics to it. तो ये हम लोग बोल रहे थे कि नहीं कर, right? So यहाँ पे if you just look at it again, because it's a very slightly offbeat passage, let's try to see. ठीक है. Consider my iPhone which needs to be fed with electricity. Blah, blah, blah. Does it have personhood at all? Because it is connected to me, right? Connected to me, individual. Drawing this resource from me as an owner or source. For the Maya, the answer was no. Non-human persons were not tethered to specific humans and they did not derive their personhood from a connection with a human.
इट्स अ प्रोफाउंडली डेमोक्रेटाइजिंग जो भी है, राइट? ह्यूमंस आर नॉट मोर इंपॉर्टेंट पर्सन, तो ये मोर इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें नहीं कर रहे थे. तो लेट्स सी व्हाट ऑल ऑप्शंस आते हैं. The personhood of the incense burner and the stone chopper was a function of their usefulness to humans, right? So incense burner and stone chopper का personhood was a function of their usefulness to humans. तो जितना ज्यादा यूजफुल होगा टू एन इंडिविजुअल वो ज्यादा पर्सन होगा, एंड जितना कम यूजफुल होगा तो वो कम पर्सन होगा. इट्स नॉट लाइक दैट डेमोक्रेटाइज कर दिया ना सबको, तो ऐसा नहीं है कि यू आर लेस पर्सन एंड दैट अदर वन इज अ मोर पर्सन करके, ऐसा नहीं है. दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो दिस इज नॉट what the passage is trying to say. In other words, अगर ये सही होता, if it was useful to humans, then it would have become a person. So iPhone, if it is useful to humans, तो person बन जाएगा. But that is not the case in terms of the Mayans. ठीक है, तो ये करने से ना invalidate हो जाएगा. This is against what the passage is trying to say. Now let's look at the other options and see. Classic Maya songs represent both humans and non-living objects as characters talking and interacting with each other. ठीक है, तो अगर ये देखते हैं, इट्स फाइन ना, ह्यूमंस एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एज कैरेक्टर्स टॉकिंग इंटरेक्टिंग चीज, तो हाँ मतलब परफेक्ट है. तो हम लोग ये नहीं बोल रहे कि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेरे लिए ज्यादा यूजफुल है और वो मेरे लिए कम यूजफुल है. दैट इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. फाइन. सो यहाँ पे दिस विल नॉट इनवैलिडेट द पर्पस ऑफ द आईफोन एग्जांपल इन द passage. The clay incense burner with spiky appliques was categorized only as a person and not as a tree by the classic Maya. Right? So अगर ये करते, they are still classifying it as a person ना, clay incense burner. That is what they are doing. So iPhone example के अंदर बोल रहे हैं कि iPhone because it is used by an individual, that is why we are, and because it is a special correction to us, that's why we are attributing human traits to it. यहाँ पे हम लोग उल्टा बोल रहे हैं, कौन से ट्रेट को ज्यादा दे रहे करके बोल रहे हैं, विच इज नॉट द पॉइंट ऑफ द आईफोन एग्जाम्पल. Last option, unlike modern societies equipped with mobile phones, the classic Maya did not have any communicating objects. This is absolutely false according to the passage. बोला है कि मोबाइल फोन्स नहीं थे बट अदर कम्युनिकेटिंग ऑब्जेक्ट्स तो थे. सो डी इज अ कंप्लीट deviation from what the passage is trying to say. उसका और आईफोन एग्जांपल का कोई लेना देना नहीं. इट्स नॉट अबाउट कम्युनिकेटिंग ऑब्जेक्ट्स, इट्स अबाउट एन आईफोन बीइंग इंपॉर्टेंट टू अस, एंड वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लोग उसको पर्सन का दर्जा दे रहे हैं, स्टेटस दे रहे हैं, राइट? बट अगर वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, देन विल नॉट गिव इट अ स्टेटस, राइट? दैट इज अ प्रॉब्लम. मायंस वेर वेरी डेमोक्रेटाइजिंग, डेमोक्रेटिक, सबको बराबर का पर्सन माना जाए, दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट? सो यहाँ पे वाज अ फंक्शन ऑफ द यूजफुलनेस टू ह्यूमंस, नो, अकॉर्डिंग टू द माइंड्स, नो, दैट वाज नॉट द केस. बट अगर वो करते, देन आईफोन एग्जांपल खत्म हो जाता, देन वी वुड हैव लाइक, हाँ ठीक है, आईफोन इज यूजफुल टू अस, वी आर गिविंग इट पर्सनल एट्रीब्यूट्स, फेयर इनफ. ठीक है, या. सो दे हैव नॉट कैटेगराइज्ड एज पर्संस बिकॉज ऑफ द यूजफुलनेस, करेक्ट? सो यूजफुलनेस के बारे में हम लोग उस पे हम लोग डिपेंड नहीं कर. क्वेश्चन 2, which one of the following if true would not undermine. अब ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं टू रीड. if true would not undermine, not undermine मतलब क्या? undermine मतलब नीचे कर दिया उसको, invalidate कर दिया, negate कर दिया, ठीक है? would not negate, ठीक है? अब ये अगर not negate जो है, not support, negate मतलब क्या होता है? not support होता है. so ये दोनों हट जाएंगे, we'll be left with this. which of the following if true will support or at least do not negate the democratizing potential of the classic Maya worldview. ठीक है, तो कौन सी चीज सपोर्ट करेगी या इट विल बेसिकली नॉट नेगेट. ठीक है, they believe that animals like cats and dogs. अच्छा, I'll give you another 30 seconds, try this out and then we will discuss the answer to this one. So again, and if you are watching the recording or if you are trying to do it on your own, na, just try to get the answer before you look at the answers, because these are slightly complicated questions. The passage is also not very straightforward. So this will count as a moderate to difficult-ish passage in terms of the cap. All right, ठीक है. So you can think about it and maybe put it in the chat what your answer is. So which are the following if true would not undermine. अगर true है तो not undermine. Not undermine मतलब support, right? So support the classic Maya world.
क्लासिक माया वर्ल्ड व्यू क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट ज्यादा पर्सनल या कम पर्सनलाइज्ड नहीं है या फिर पर्सोनिफाइड नहीं है. वी आर नॉट सेइंग दिस इज यूजफुल टू बी, दैट्स व्हाई इट इज अ पर्सन, एंड दिस इज नॉट सो यूजफुल, सो इट्स नॉट अ पर्सन. वो सब भेदभाव नहीं करते थे, राइट? दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग. सो यहाँ पे देखते हैं. They believe that animals like cats and dogs that live in proximity to humans have a more clearly articulated personhood. Absolutely not. ये तो बोल ही नहीं रहा ना, उल्टा बोल रहे मायंस कि भाई यूजफुल है करके हम लोग उनको पर्सन नहीं बनाएंगे, राइट? एंड कैट एंड डॉग्स दैट आर इन प्रॉक्सिमिटी आर नो मोर persons than maybe some other creature or other non-living object that does not stay with us. तो ये तो definitely not true. They understood the stone implement and the incense burner in a purely human form. ठीक है, स्टोन इंप्लीमेंट एंड इंसेंस मैंने प्योरली ह्यूमन फॉर्म, बट हमने देखा है ना कि फॉर्म तो मटेरियलिस्टिक है ना, तो हम लोग बोल रहे हैं दैट इंसेंस बर्नर या जो भी स्टोन इंप्लीमेंट जो है ना, इट इज मेड ऑफ स्टोन, इट इज नॉट इन अ ह्यूमन फॉर्म. तो हम लोग देखा था ये वाला तो नहीं करके बोला था हम लोगों ने, एंड वी हैड सेड दैट ये स्टोन है तो इसको हम लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, बट ये गलत है करके. सो ह्यूमन फॉर्म में डेफिनेटली दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द स्टोन इंप्लीमेंट एंड इंसेंस बर्नर. थर्ड, while they believed in the personhood of objects and plants, they did not believe in the personhood of rivers and animals. ये भी नहीं बोला गया है. It was a completely democratized thing ना, democratic setup था ये. So definitely they said that अगर रिवर है तो भी पर्सन हो सकता है, एनिमल भी पर्सन हो सकते हैं, प्लांट भी पर्सन हो सकते हैं, सब कुछ पर्सन हो सकते हैं. So C is not right. They depicted their human healers with physical attributes of local medicinal plants. सो ह्यूमन हीलर्स को वो लोग प्लांट्स के हिसाब से दिखाते थे, विच इज अगेन एन इंटरेस्टिंग टेक. इट इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज डायरेक्टली, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, वो ह्यूमंस को प्लांट्स जैसे दिखाते थे. सो प्लांट्स और ह्यूमंस में भेदभाव नहीं करते थे, डेमोक्रेटाइज करते थे, एंड दैट इज बेसिकली वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो दिवाकर योर आंसर इज करेक्ट. ठीक है, दैट वाज द सेकंड वन. थर्ड देख लेते हैं एक बार. On the basis of the passage, which one of the following worldviews can be inferred to be closest to that of the classic Maya? Again, think about this. I'll give you 30 seconds, 1 minute, and then we will start with this. Fine. So let's look at this. Let's try to see this. On the basis of the passage, which one of the following worldviews can be inferred to be the closest to that of the classic Maya? So closest होना चाहिए. Again, क्या वर्ल्ड व्यू है? हम लोग फंक्शनैलिटी के हिसाब से लोगों को पर्सन या चीजों को पर्सन या नॉन पर्सन नहीं घोषित करेंगे. We will democratize it entirely. Even if it is not useful to us, it can still be classified as a person, and so on and so on. Right? Fairly straightforward argument that we have. A tribe that perceives its hunting weapons, right? Hunting weapons as sacred person artifacts because of their significance to its survival. अब ये ट्राइब के सर्वाइवल के लिए वो यूजफुल है, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग उसको पर्सन पर्सन आर्टिफैक्ट करके ये करेंगे, उसको नाम दे देंगे पर्सन आर्टिफैक्ट करके. नॉट रियली, राइट? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस टू सर्वाइवल. नो, doesn't matter if it is significant or not significant. It is a person, it is a person. That's it. A futuristic society that perceives robots to be persons as well as robots because of their similarity to humans. मतलब कोई भी चीज ह्यूमन जैसा दिखता है इसके लिए उसको पर्सन करके यूज करते हैं, पर्सन करके क्लासिफाई करते हैं. नॉट रियली. इवन इफ समथिंग डज नॉट लुक लाइक अ ह्यूमन, यू कैन स्टिल क्लासिफाई इट एज अ पर्सन और हैव टू क्लासिफाई इट एज अ पर्सन. तो ये प्रॉब्लम है. A tribe that perceives plants as person plants because they form an ecosystem and are marked by needs of nutrition. अब यहां पे ना, इफ यू लुक एट वन स्मॉल थिंग इन द पैसेज, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ये दो चीजें दी थी. तो वन इज इंडिविजुअल नीड्स दैट वाज देयर, तो नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एंड आउटवर्ड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, सोसाइटल ऑब्लिगेशंस. दे फॉर्म एन इकोसिस्टम. सो यहाँ पे इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों चीजें यूज कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल परसीव प्लांट्स एज पर्सन प्लांट्स. फेयर इनफ, दिस लुक्स नाइस. D. A tribe that perceives its utensils as person utensils in light of their functionality and bodily needs. फंक्शनैलिटी का क्या संबंध इसके, राइट? फंक्शनैलिटी के हिसाब से हम लोग नहीं क्लासिफाई कर रहे. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर. डी इज ऑल्सो नॉट.
ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाई वी मार्क ऑप्शन सी, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स एज इंडिविजुअल्स और पर्सन्स, बिकॉज इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों जगह पे दे आर एग्जिबिटिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स, दे नीड समथिंग एंड दे आर ऑब्लिगेटेड टू डिलीवर समथिंग. दोनों चीजें होनी चाहिए. फाइन. सो दैट्स वेयर सी कम्स इनटू द पिक्चर. अदरवाइज या तो हम लोग यूटिलिटी है करके उसको पर्सनालिटी दे रहे हैं, या तो ह्यूमंस जैसे दिखते हैं करके हमने बोला भाई ये पर्सन है करके. नीदर ऑफ दीज हैव बीन मेंशन्ड इन द पैसेज. Last question. Which one of the following best explains the additional complexity that the example of the incense burner illustrates? Incense burner का complexity क्या था? The incense burner was made of clay, but उसके ऊपर हम लोग वो wooden चीजें लगाते थे. And because of it, people thought of it as a tree as well. तो उसको made of clay भी बोलते थे, can be thought about as a tree as well. तो उसको person भी बोलते थे और tree भी बोलते थे. ठीक है? So what was exactly the additional complexity? That is the question. So look at it and just see if you are able to answer this, and then we will discuss the solution. This is the last question of the assignment. ठीक है. Let's look at this. Let's try to think about this. Additional complexity. तो हम लोग क्या बोले थे पूरे पैसेज में, क्या बोला कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आ गया है? We were saying that persons. ठीक है, persons बोलते थे. Then the Mayans said that inanimate objects जो थे, inanimate objects can also be classified as persons. And additional complexity क्या है? एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, बिकॉज आई हैव दिस इंसेंस बर्नर. ठीक है, मेरे पास इंसेंस बर्नर है. दिस इंसेंस बर्नर वाज क्लासिफाइड एज अ पर्सन, ये तो हमने बोल दिया. एंड क्लासिफाइड एज अ पर्सन में दो चीजें थी. वन इज ऑफ कोर्स इट इज मेड ऑफ क्ले, दैट वाज देयर. एंड अगेन इट वाज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ट्री. सो हम लोग बोल रहे हैं दैट इट इज अ पर्सन एज वेल एज अ ट्री. दोनों चीजें एग्जिस्ट करती. तो पहले हम बोल रहे हैं कि सिर्फ पर्सन है करके, फिर बोल रहे हैं कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को भी पर्सन बोला जा सकता है. एंड नाउ वी आर सेइंग दैट वन ऑब्जेक्ट कैन बी इंटरप्रेटेड इन टू वे, उसको पर्सन भी बोल सकते हैं और ट्री भी बोल सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज बेसिकली द कॉम्प्लेक्सिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. Yeah. So if you look at the options that we have here, let's try to see what we get. ठीक है. So the example adds a new layer. Yes, it does. To the non-binary understanding of personhood. Yes, it does. By bringing in a third category. Yes, which is a person plus tree that shares a dissimilar reaction with the previous. पूरा dissimilar नहीं बोल सकते, but let's look at this later. But पहले बोलते थे कि person है. Now we are saying कि person भी है और tree भी है. So we are not saying person नहीं है, right? We are saying it's a person as well as a tree. Let's see. Second, complicates the non-binary understanding of personhood. Yeah, the entire passage complicates stuff a lot by bringing in the sacred. अब sacred तो कुछ एक tree दिया है, sacred, yes. Establishing the porosity of the divine and the profane. अब profane तो कहीं पे कुछ बोला नहीं है, right? So divine और profane ये porosity नहीं है. Porosity was between living and non-living, let's say, or humans and non-humans. That was the porosity that we are talking about. So ये तो नहीं होना चाहिए. प्रोफेन और डिवाइन की बात तो यहाँ पे नहीं कर. द एग्जाम्पल प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन टू द नॉन बाइनरी अंडरस्टैंडिंग. एक्सेप्शन तो नहीं बोल रहे हैं.
वी आर सेइंग दैट चलो अभी तक तुम बोले थे कि ह्यूमन है करके, पर अभी मैं बोले ह्यूमन भी है और ट्री भी है. So this is not an exception to the non-binary understanding. The example adds a new layer to the non-binary understanding. Yes, it does. Of personhood, yes. By bringing in a third category, yes, that shares a similar relation with the previous two. ठीक है. So similar relation with the previous two. So personhood के इसके अंदर similar relation है कि dissimilar relation है. That's why A versus D is our is the conundrum that you are facing. तो dissimilar मतलब क्या बोलते थे हम लोग बोले पर्सन 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 एंड सडनली यू आर सेइंग कि जो पर्सन नहीं वो तो ट्री है करके. But in the example that we have been told that it is categorized as a person, right? The incense burner is categorized as a person, but also as a tree. But also है. It's not that कि person नहीं कर रहे हैं, सिर्फ tree कर रहे हैं. ठीक है? That's why it's a similar relationship to what we had seen in the previous two. So that's why the answer here should be option B, right? It's not dissimilar completely. It's similar to the previous two. Fine. And that's basically what ends this particular passage. ठीक है? Yeah. So in case there are no doubts, I think I'll close the session. And in case there's something, I'll just stay live for another 30 odd seconds. कुछ अगर है तो let me know in the chat. Otherwise, you can just put a comment and I'll try to answer it there. And yeah, otherwise we are done for the day. So we will have another daily drill tomorrow. So tomorrow's daily drill will be on quant. So make sure that you go through the questions and you go through the portal, register yourself, take it as a test, go through the key, and then come prepared for the session tomorrow so that you can derive the most benefit from it. ठीक है? Sure. So on that note, I'll close the session again. Just to share the recent happenings on the channel. The CAT Mastery Program is live now, available at a discounted price of 8,000 rupees for all three sections combined. It has a lot of live sessions, recorded questions, tests that are there. तो ये सारी चीजें इसके अंदर at a sectional level. So make sure that you have a look at it. And if you like the program, go for it as well. It will help you solve those additional questions and maybe get to know these shortcuts and smarter ways of solving particular question types that will help you solve the moderate difficult questions and the cat in a faster manner. Okay, so on that note, let's close the session. Thank you everyone for turning up. I'll see you again with the daily drill on quant tomorrow. And yeah, till then, take care everyone. Stay safe, especially for those of you who are in Mumbai and Maharashtra. Make sure that you are staying indoors and not going out because there is plenty of rain from and expected to come over the next couple of days. So all of you stay safe, and I'll see you again tomorrow with the next daily.